So always remember what I was telling is people go by logic first and emotion later. So in your pitch, whenever you do, you talk logic first and you talk emotion later. So pehle, when you speak a lot of logic to people, the door opens up, door towards the emotional mind. And then you go and tell your emotional story. Then you talk the emotional, then always happen. So the thumb rule for your presentations, always remember, is a pendulum. Pendulum is a thumb rule. So you talk 1 or 2 slides on logic, 1 or 2 slides on emotion, 1 or 2 slides on logic, 1 or 2 slides on emotion. When this entire presentation is made like wavy presentation between shifting between logic and emotion, you will see you will have a lot of convergence happening. Okay, logic would satisfy people's brain for enrolling. Emotion will help them push to take a decision. वो जो buying decision है ना, end of the day when you swipe a card or when you do a payment transaction with anyone, उस समय पे fears होते हैं दिमाग, and fear comes from your old experiences कि you made a wrong decision with wrong people, and that's where the fear comes in. And but if you have done logical and emotional balancing well, people will always take decision with you, क्योंकि आपने logically तो satisfy कर ही दिया ना उसको. फियर लॉजिक लेके आता है, आपने पहले लॉजिक को ठंडा कर दो उसके, तो फियर खत्म. देन इमोशन हैज अ क्लियर पिक्चर टू गो अहेड एंड वर्क विथ यू. सो लॉजिकल वन, दैट्स व्हाई हमारा जो लीड वीडियो है, इट्स प्योरली अ लॉजिकल वीडियो. वी आर नॉट टॉकिंग एनी इमोशन देयर, इट्स प्योर लीड. सो जैसे ही लॉजिकल वीडियो ने दरवाजा खोला, फिर हमको चांस मिलता है अंदर जाने का, इमोशनल माइंड के साथ काम करने का. नाउ सेकंड स्टेप इज आवर इमोशनल स्टेप. जैसे मैंने कहा ना, लाइफ इज ऑलवेज पेंडुलम. So successful people will always do pendulum, left brain, right brain, left brain, right brain, left brain, right brain. तो हमारा second step process क्या है? $1 million book topic. Okay, now this is the most important step in the as a book coach. अगर ये step हमने अच्छे से कर लिया ना, तो you will sit and just smile and book will happen automatically. आपको calls में से बैठ के smile करते रहना पड़ता है बस. You be there, keep smiling, people will keep writing. But उसका crux जो आता है ना, वो इस step से आता है, $1 million book topic से. Now let me, before I tell you how this is be done, and मैं आप सबसे भी करवाऊंगा ये, मतलब you have to do it this with each other, because I want you to practice this. This is the crux. Now always remember, audience जो आपके सामने बैठी हुई है ना, those are most intelligent people in the world. Always remember that. Always as a coach, you always know that I am not an intelligent. The person I'm having a call, that person is more intelligent than me. ये हमेशा एक thought हमेशा दिमाग में रखो करो. Second thing is, my job is to facilitate, show him the mirror that you are intelligent. That's what the job of coach is. मुझे उनको दिखाना है कि you are powerful. So unfortunately, they don't know they are powerful. Now हमारा job है उनको बताना क्या powerful. अब book coaching पे अगर हम आएंगे, तो any person who would write a book on his or her own life, अपनी जिंदगी से रिलेटेड अगर बुक लिखेगा तो उसके पास कंटेंट की कमी है क्या? नहीं, because you are picking up your life as a topic, but we are not writing a biography. No, we are not talking gaga about why I'm so successful, why I'm so best in the world, and हम वो नहीं लिख रहे. So because biography के लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम लेना चाहिए. If someone want to write a biography, let him. But generally non-fiction self-help category में क्या है? Whatever knowledge people have, it has to be directed to a specific segment called audience. ठीक है, तो $1 million टॉपिक में पहले तो उसको यही पता नहीं है कि उसकी पावर्स क्या है, उस इंसान की पावर्स क्या उसको पता नहीं है. तो हमको उसको रियलाइज करवाना है कि तुम्हारी पावर क्या है, what is how powerful you are. And how do we do that is, there is a very powerful principle given by Japanese called ikigai. Ikigai. Okay, who will explain what is ikigai? Whatever you know about ikigai. Yes, Sanjit. What is ikigai? So ikigai is a Japanese concept which, as far as I've read, I understood that it basically means what is your why for getting from when you get up in the morning from your bed. What is your why? Big why that you're getting up means they're telling you to find your purpose.
And in that book, mainly they highlight four things that forms an ikigai. One is that we should pick one thing that we are good at. We should have one thing that we are good at. Second, we should have one thing which we can get paid for. Third, we should have one thing which the world needs. And the fourth thing which should that we love doing. And when these four are one, like or somewhat similar, then it forms an ikigai. You're on mute, Kailashji. Anyone else want to add something top of what So, Sanchit said? in continuation Yes. with what Sanchit, No, yeah, no, please. all the point of views. Yes. Okay. So Dr. Shivani, yes. In continuation of what Sanchit said, yes, that forms the Ikigai Venn diagram. But the ultimate goal is to stay happy. Stay happy by whatever you are doing, and that will lead to your longer life. Wonderful. Even whatever passion that gives a value added to happy and jolly life. Wonderful. More I can add it, what you love, your passion, and what the world need is your mission, and what good you are in, and then what you can get it for a paid, that is your profession. Correct. अभी मैंने इसको क्या समझा? I'll tell you my word, because we all have learned the right way. Only we have our own interpretations of things. And what I understood, उसके ऊपर मैंने exercise design की. So what I understood is, in living in this world, we have to follow the rules of the world. Correct? जैसे let's say you decide to play a football, you have to play the football with the rules of football. I cannot, take a football in hand and run. Football says कि आपको हाथ नहीं लगाना है ball. You have to kick the ball. That's a rule of a football. There वैसे इस दुनिया के भी rules हैं. The way we live in this world. And I understood the most important rule in this world for most of the people, not for all the people, but most, maybe I'll say 90-95% people, is having a good money in bank. अगर बैंक में पैसा होता है ना, अगर बैंक में पैसा होता है, तो आपके ऊपर bread and butter का खर्चा नहीं है. मतलब if your life is on automated mode, that you don't have to earn to live your life for your expenses, जो भी expenses हैं आपके, तो आपका दिमाग next level पे काम करता है. You go upgrade in mind, because then you don't think of money. So money is most important, but unfortunate truth of the world is people won't accept this. Okay, and because there are few cases where people have earned money but they are not happy. So इसका मतलब क्या है? If you want to get into an ikigai, आपको पैसा भी चाहिए, and I will keep money first, and you need to be happy too, and it has to be balanced. अगर ये happiness and money comes together, then I am a point of ikigai. But money I'll keep it first. So happiness के लिए क्या चाहिए? Anything which I follow, which I like. Because when you go and earn money for whatever you do, आप जो भी काम करते हैं ना, उसके लिए आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो ट्रबल्स आएंगे. क्लाइंट इरिटेट करेगा, लोग पैसे नहीं देंगे, 4 में से 2 लोग पैसे नहीं देंगे, 2 पैसे देंगे, बहुत तकलीफें होती हैं. जैसे मेरा कल सुबह 5 बजे कॉल है. आई हैव अ कॉल एट 4 o'clock in the morning. मैंने 3:30 बजे भी कॉल लिया हुआ है, 3:30 in the morning, because of I work global time zone, so मैच करने के लिए कभी-कभी लेना पड़ता है. Now waking up at 3:30 in the morning and taking a call requires lot of hard work. Okay, so इसका मतलब पैसा कमाने के लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन if you are passionate about what you're doing, these problems do not look like a problem. ये प्रॉब्लम नहीं लगती हैं. Okay, so that's one thing. So I need to understand कि whatever I love, if I do that way for earning money, these problem becomes tiny. प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन छोटी लगती हैं प्रॉब्लम. और अगर मुझे कुछ चीज पसंद नहीं है और फिर मुझे कोई करने को बोले, तो फिर शायद मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि I don't like that thing. So I understood that money is priority. Second is love, and third thing what I understood is if I'm able to add something to people's life. अगर मैं किसी की जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करता हूँ और सामने वाला बोलता है ना कि नहीं थैंक यू वेरी मच, यू डिड वंडरफुल फॉर मी, तो आपको ना बहुत हैप्पीनेस मिलती है अंदर से. So what I understood is इकिगाई के लिए 3 चीजें चाहिए. पैसा चाहिए, पैशन चाहिए, लव एंड पैशन चाहिए, और ब्लेसिंग्स चाहिए.
इन तीनों का कॉम्बिनेशन इकिगाई होता है. तो मैंने क्या सोचा, if people are writing a book, why don't also they write book on ikigai? अपनी बुक इकिगाई पे लिखो ना. Why don't you write your book on ikigai? So इकिगाई कैसे पता चलेगा? तो मुझे ये पूछना पड़ेगा कि तुम्हें किस चीज से प्यार है. अगर मैं सवाल सीधा पूछ लूं आपसे कि what is your hobby interest, lot of people will not be able to give me answer. और वो तो यहाँ तो कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज के टीचर ने बोला इंटरव्यू में जाना है तो रट लो हॉबीज. वो रट ली हमने हॉबीज. वो आज तक उन्हीं हॉबीज को रट्टा मार के बोलते रहते हैं. पर आर दे रियल हॉबीज? No, those are not real hobbies. So I need to teach people, rather not teach, I need to ask question in a way where they understand what is their hobby and passion. Second, I need to teach people what they are good about. किस चीज में अच्छे हैं. Okay, and then we have to later think कि इससे पैसा कैसे कमाया जाएगा. That's the third part of it. So अगर अभी मैं ना I want you to think loud and ask one question from me. मेरे से एक सवाल पूछो, which is exact question to help me identify what I love. So you don't ask me. आपका question ये नहीं होना चाहिए कि कैलाश what do you love? That's not question. आप ये सवाल नहीं पूछोगे हमसे. आप मुझसे कुछ और सवाल पूछो जिससे मुझे समझ में आए कि मुझे क्या पसंद है. Think. And then I'm going to give you questions. And वो question आपको रटने हैं. मैंने already भेजे हैं आपको. This is the questions we use. But I want you to think. Once you think first and then answer, then in the coaching calls you will get into very awkward situations where what I'm teaching may not work. But if you know how to think, then automatically you'll be able to take yourself out in the situation. So अभी आपका टास्क क्या दिया है मैंने. आप मेरे से एक सवाल ऐसा पूछो. एक सब लोग सबको एक सवाल पूछना है. Where you going to ask me a question where you will not ask me this what do you love. You ask me something else which would tell you about me that what I love. और वैसे भी ये बाबा जी का ज्ञान का सेशन तो है नहीं कि मैं बोलूंगा सत्संग और आप सुनोगे. मैं सवाल पूछने वाला हूँ. अटेंटिव रहना जरूरी है आप सब लोगों को. Yes. Shall I make an attempt? Yeah, Sanchit, I saw his hand first, then we go to Okay. Dr. Shivani. Anyhow, Sure, सबको पूछना है. You don't have a choice. Yes, Sanchit, ask me a question. So recently, like a year back, I've discovered my passion or love for doing video editing, especially like other fields also, but especially video editing. So how do I make sure that this is the actual thing I'm passionate about? Because now, as of now, I'm very passionate about this, but I don't know ki in the future I will be or not. So how do I make sure that this is the only one, or I'm in the So- excited period that I'm trial and error and all of that? So Sanjit, park this question right now. Okay. अभी मैं आपको जवाब देता हूँ इसका. लेकिन है ना, right now I want you to ask me a question. कैलाश पिंजानी से एक सवाल पूछो. जिस सवाल का जवाब कैलाश पिंजानी देगा आपको, और आप ये सवाल नहीं पूछो कि what do you love कैलाश. लेकिन उस सवाल के जवाब में उसका आंसर हिडन रहेगा सैंडविच स्टाइल में. Yes, sir, Shivani, just try Yeah. asking one. So, Kailash ji, what is that you do and you forget about the time? Wonderful question. So what she asks is ऐसा मैं क्या करता हूँ जिसमें मुझे घड़ी का टाइम देखो, ओह 1 घंटा हो गया. Oh, I thought it's just 5 minutes. Yeah. Okay, yeah. So for me, let me answer. When I ride a bike, Yes. जब मैं कार चलाता हूँ या बाइक चलाता हूँ, तो time passes very fast. मुझे समझ में नहीं आता time निकल गया. Very good question. Awesome question. Who else? Prakash. Yeah, I mean, Kailash ji, what is the thing that you will be curious about always to learn more about? Curious or learn more? Or More both? curious. What is the topic? It's a that you good- will always it's a be good more question. curious about? So, but learn more would be more appropriate question. क्योंकि है ना, curious तो मैं बहुत सारी चीजें हूँ, but learn more मतलब I will only take actions in the direction where I think this curiosity I want to kill. Hmm. Okay, so what? So the question is what? So, but you make a note of these questions, sir. जो शिवानी ने पूछा, what is the thing you do when time is become immaterial? प्रकाश ने पूछा, what are the things you want to learn more about? That's another question. Very good question. Yes, Simran. Kailash ji, what is it that you can talk about for hours and you won't get tired? Wow, very good question. Which topic will you talk for hours and you will not get tired? Wonderful question, because then suddenly I think हाँ कौन से area में मैं बात करता हूँ. So now what you're doing right now with me, you are putting me inside myself
और मुझे अंदर मेरे अंदर डुबकी लगवा रहे हो मेरे को. और है ना, I'll come to this process why this is so powerful process later, but let me listen more questions. सबको एक क्वेश्चन पूछना ही है. Good bad doesn't matter, I'll ask but you have one to skill our question. question. Yes, Subhi. What would you do if you don't have to work? Good question. मतलब मैं इस सवाल को जनरली पूछता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे सवाल का पार्ट है, सो मैं ये पूछता हूँ कि लेट्स से यू हैव 10 crore rupees FD in your bank. 10 करोड़ रुपए की FD है, because you know we need to get people into a situation where the mind works. 10 करोड़ रुपए की FD, 8% ब्याज है, 80 लाख रुपए आपको ब्याज मिलता है. 80 लाख रुपए ब्याज का मतलब होता है कितना हो गया पर मंथ का, तो 7 lakhs per month approximately, 6.5 lakh per month you are getting interest from the bank every month. उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है. 7.5 lakh interest per month, मतलब now you are not working for money. Now in this situation, when you reach this situation, then what will you do? That's a very good question. Awesome. Neelam, yes. What would you good at? I mean to say, what you good at your expertise is. What you are good at is Expertise. expertise. लेकिन है ना क्वेश्चन क्लियर नहीं है. मतलब this is a good question, but it need more words or situations to make it clear. And always remember, when you ask a question, put me into a situation. Okay. So when you put me into a situation, instead of question, when you put me into a situation, asking question is giving answer to me is very simple. जैसे मैंने आपको बोला कि आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए हो, so put me into a specific situation that would help a lot. Monica, do you want to try something? Sagar? What is your favorite thing to do now? हाँ. What is your favorite time pass? Time pass कैसे करोगे? मुझे पता है, फिर इसको एक कमेंट डालेंगे. अब मुझे पता है कुछ टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टाइम होता तो कहाँ पास करते थे? Good. Now it is very specific. Now you're saying time pass. Sunday को क्या करते हो? फालतू बैठे रहते हो तो क्या करते हो? That's what it will trigger to. Yes, Monica. So when you are with your friends, what is the general topic of discussion which you like to do among your friends? So with your friend, most of the time, what topics you discuss? Very good, because दोस्तों के साथ तो हम whatever I like, I'll discuss. No, I won't end up discussing anything else. Sagar? Actually, I have two, but both are covered. So I have created one more. If you are with somebody who is making you quite bore with his conversation, so that time, what is the thing which is calling you from inside? कि यार इससे अच्छा तो मैं वो कर लेता काम. What is that thing कि जो बार बार बुलाएगी उधर? So he put me into a situation कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो मैं, लेकिन यहाँ से ना escapism है. I'm trying to run away. So run away के लिए तो कुछ भी चलेगा मेरे को, to be very frank. नहीं, Passion लेकिन call नहीं करेगा ना. I'm just asking. This is a good question. So let me ask you. Let me give you a couple of more questions. Like, you know, who do you watch on YouTube or Instagram most of the time? Instagram पे किसको follow करते हो? किस तरह की reels देखते हो? Because most of the time today spend a lot of reels. Reels देखते हैं हम सब लोग, correct? तो reels किसकी देख रहे हो तुम? तुम्हारे Instagram पे खोलो अभी. And algorithm are so powerful on Instagram and YouTube. They know what I like. We all 9 people would have a different reels in our mobile. How many of you know that? हम सबके अलग अलग reels हैं, क्योंकि हमको behavioral track किया गया है. तो मेरा YouTube का जो डैशबोर्ड है और मेरे को जो Instagram के रील हैं, वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से हैं. So tell them go and just check your YouTube and Instagram. अब देखो क्या देख रहे हो आप. That's your interest. So what we did is, हम क्या करते हैं ना, इंसान को पता नहीं कि मेरी हॉबी क्या है. So we put him to a situations, and those situations basically comes into a thing where they understand कि हाँ ये चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब ये मेरी powerful position है. Now I will get this exercise done with all of you because I want you to do this exercise. And second thing is, when I'm doing the exercise, I'll also tell you some nitty-gritties of the exercise. करते समय कैसे explain किया मैंने. Now let me tell you why this is
very important process. हमने जो first process किया, it was a logical mind process. This is an emotional process. इसमें हम हमारे जो सामने ऑडियंस बैठा हुआ है, जो हमारा मेंटी बैठा हुआ है, उसको हम एक डिफरेंट जर्नी के ऊपर लेके जा रहे हैं. ये सवाल जो हम उससे पूछ रहे हैं ना, ये तो उसके मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ जो भी उसके मोस्ट फेवरेट है, वो भी नहीं पूछ रहे हैं ये सवाल. You are giving him that a feeling that you are important to me. That's what I'm saying. So when I'm asking, Shivani, what do you like, who you follow, अगर मैं आपसे आपके बारे में सवाल पूछ रहा हूँ, तो I am making you feel that you are important to me, and I am also making you feel that you are important to yourself. ये feeling मेरे से पहले उसको किसने दी? मैं तो मेरी तो पहली दूसरी मुलाकात है उसके साथ में, because I want to help him write a book. मेरे से पहले ये feeling उसको किसने दी होगी? आपकी अपनी लाइफ में सोचो, when did you get this feeling last time when someone was too much interested in you, about you, and what you love, what's your passion, where do you pass your time? आपसे आपकी जिंदगी में ये सवाल कभी किसी ने पूछे थे क्या, और how long that was? 8-10 years back. हाँ, maybe जब हम लोग डेटिंग कर रहे थे नए उस समय पूछे रहेंगे हम एक दूसरे से कि what do you like and all those things to impress other person, that's all. Yes. In the beginning only. In the beginning only, correct. Now suddenly this person who's sitting in front of you, ये बंदा ना अंदर पहले हमने लॉजिक से उसका दरवाजा खोला, इमोशन से उससे बात किया. Now this guy is in highest level of feelings कि मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरे बारे में जानना चाहता है. That's the missing part of the world, and that's where sales happen. यहाँ sales हो रही है यहाँ पे, उसको नहीं पता सेल हो रही है. Okay, sale is very positive word to me. So sale हो रही है का मतलब वो मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर रहा है, क्योंकि जितना मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ ना, उतना तो उसे उसकी बीवी नहीं पूछती है जिस आदमी से बात कर रहा हूँ इतना डीप में. So that's where it happens. Now there are two things happening in the process. Number one process is I'm telling him that I'm interested in your growth, your happiness and your life. That's why I'm asking question about you. मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ. Number one. Second, in the process he's also learning what is more powerful for him or her. उनको भी समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर अच्छा क्या है, because that exercise is powerful. So double benefit होता है. Now let's do this exercise quickly, and more than exercise, I'll decode you how do I ask these questions. इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है. So whenever you go and meet a client, this is a second call. अभी तक हमने ना नहीं, this is a third call. पहले वीडियो है, दूसरा ट्रस्ट कॉल है. ट्रस्ट कॉल पे मैं अभी तक नहीं आया हूँ, वो सेल्स है, उसमें मुझे बहुत प्रैक्टिस करवानी है आपको. So that I'll teach you later. This is a third call we are talking. जब उसने पे कर दिया आपको कि हाँ मुझे आपके साथ बुक लिखना है, now you get into this process with that person. Okay, this is a 3-step process. आज का process 3-step process है. तो पहला step है helping that person identify what book he should be writing. और वो क्या है, whatever is ikigai. Now let me quickly decode that for all of you. मैंने आपको एक $1 million book topic का एक ये PDF भेजा है. So I use that PDF, I give that PDF print out to them, and और अगर Zoom call है तो मैं उनको पहले से भेज देता हूँ कि आपका print out निकाल के रखो. I'm going to ask you these questions, and और मैं बहुत पहले नहीं भेजता हूँ. So let's say if the call is at 4 o'clock, I would be sending this maybe at 3 o'clock. 1 घंटा उसको बस printing time के लिए. बहुत पहले भेज दिया ना तो पढ़ के वो अपना mind बना के बैठा होता है. So we don't have to give too much time to that person. Or sometime I don't even send. I said take a pen and paper and let's do an exercise. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब लिखो. मैं they have to write, necessarily they have to write. Writing is very necessary. Yes. Sir, do we have to do this exercise with everyone, or if someone who already knows he wants to write on this topic, there we can just ask him? So this is a good question. So अगर इसमें कैसा होता है, someone is already clear कि मुझे इस topic पे book लिखना है, so we may skip this, or you ask him. देखो इस एक्सरसाइज के 2 बेनिफिट है ना हमारे को, हमारी सेलिंग भी हो रही है. ओके, सो वी आस्क हिम, मेरे को ऑलरेडी टॉपिक डिसाइड है. मैं कहा ओके वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो योर टॉपिक, बट वुड यू बी ओके टू वैलिडेट दैट टॉपिक इज राइट थ्रू माय एक्सरसाइज? वुड यू बी ओके? इट विल टेक 15-20 मिनट्स. अगर आपको अगर ओके लगता है तो नो, हम चेकिंग इट अगेन, राइट? हो सकता है द रिजल्ट इज सेम. So I ask in a way that I want to push him through this exercise very subtly, softly push कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो एक्सरसाइज करेगा ना, he will have a different feeling for me. So यहाँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, इसलिए मुझे एक्सरसाइज कराना जरूरी है उसको.
Okay, now मैं सवाल पूछूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, and then you write. The first question है इसमें, write an answer. What do you love to do? What brings you joy? What are your personal interests? तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, फिर मैं सिनेरियोज देता हूँ. What brings joy to me when I ride a bike? That brings joy to me. There is no logic in things you love. There is illogic. Bathroom singing, I love. कोई logic नहीं है. So I still love. So I want you to think. Don't put your logical mind into it. Logical mind को side में रखो. Whatever you like, doesn't matter. Just write what you like. So I'm just giving example of bathroom singing, bike riding. मैं अपना example देता हूँ. Why I'm telling them? Because I'm telling go silly while writing. क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल्स लोग आते हैं ना हमारे में, तो सडनली वो सोचते हैं अरे ये मैं बाथरूम सिंगिंग कैसे लिखूं. मैं तो बोल रहा हूँ बाथरूम सिंगिंग भी पैशन होता है. So make them go silly in the question number 1. Because we want to loosen up their mind. पहले क्वेश्चन में कि कुछ भी लिखो. Anyhow, no one is going to read. This is only for you. If you are okay, you can share with me. If you are not okay, don't share with me. I am only interested in question number 10 concern. Okay. Second question is ये मैंने आपसे पूछा, what YouTube channels do you watch? Who do you follow a lot? What kind of topics you watch on Instagram and YouTube? Do you अभी यहाँ पे देखो मैंने पहले क्वेश्चन बोला, अभी now I'll be giving example. So do you follow Sadhguru? Do you watch a lot of spirituality? Do you follow a lot of business coaching advices? Do you follow business coaches? Or do you follow a lot of tech, chat GPTs and digital tech products? So आप किस चीज के वीडियोस ज्यादा देखते हो YouTube के ऊपर और Instagram के ऊपर when you're free? That's the question I'm asking you. But I have to give example because people are not, मतलब उनको सोचना नहीं आता, they don't know how to think. So I need to give them direction to think. So मैंने टेक का एग्जांपल लिया, मैंने YouTube पे किसको फॉलो करते हैं, सदगुरु का एग्जांपल लिया, बिजनेस कोचिंग का एग्जांपल लिया. Okay, so then give 2-3 examples. Now another thing I also first question, Sanchit, is What do you love to do? love to do? What brings you joy? What are your personal interests? What makes you happy? That's all. क्या करने से मजा आता है? That's the question. Second is YouTube and Instagram and magazines. What kind of magazines do you read? उन जो भी आपको पसंद है लिख दो. Because some people are more on YouTube, some are on Instagram, some are on magazines. So मैंने तीनों डाल दिया. Third question is very specifically picked up. What I feel is all the challenges. It's a very important learning to all of you too. जो भी आपकी लाइफ में challenges है ना, वो सब आपने invite किए. आप बोलोगे मैंने नहीं किए, लेकिन that's the truth. आपने invite किए. And whatever challenges came to your life to teach you something. There was a learning in it. Life wanted to teach you a lesson. Now that lesson you already learned or you're learning. And that's why the question number 3 comes in. ये मैंने आपको PDF भेजा है ग्रुप में. What are नहीं, ये question number 4 है. The what challenges have you overcome in your life or are you going through in your life? जैसे मैं question बोलता हूँ, फिर मैं example देता हूँ. जैसे are you going through a financial challenge right now or have you gone through a financial challenge ever in your life? And have you passed? Have you gone through a health challenge? बहुत मोटे थे, कोई बीमारी थी. Have you gone through a relationship challenge? What kind of challenge? So always talk about 3 types of challenges: financial, relationship, and health. That's the most people will go through. So give them an example. Give them thinking. कि आप क्या-क्या challenges go through किए अपने life. And those challenges are also part of the ikigai. So always question comes first and example comes later. Then question number 3. ये question क्या है ना कि what kind of advice people take from you. Now it's very difficult to think. So इसके लिए मैं example अच्छे से देता हूँ. So listen to the example what I give. So what advice people give you, what advice people ask you most of the time. इसका बहुत simple है, जैसे think of last 4, 5, 6 discussion from your best friends. आप में से किसी ने सवाल पूछा भी था मेरे से. So think of this discussion with your best friends. What thing they called you up? आपको उन्होंने किस चीज के लिए फोन किया? And what is most common reason people call you for? It may be your profession, but it could be other than profession too. And I'm interested in both. If it is a profession, write the profession. If it is not a profession, write that thing too, both. Okay, now give me the answer, Supriya. What advice people take from you?
generally? What kind of advice people take from you? Kind of the advice related to my profession, people ask me a Like many. profession, other than profession? Other than professional, as into I'm into emotions, so those people will ask what are the emotions they are facing, a relationship problem, and Very good. what are the advices other than the remedy, other than the Correct. whatever the remedies are Friends. there. So this is the Friends की question, बात. friends. Yeah. So सागर it's आपसे क्या सवाल पूछते हैं दोस्त लोग की बात कर रहे हैं, clients नहीं. hmm. What friends people generally discuss with you most of the time? Advice point of view. चलो सोचो सागर शिवेनी, what do you? So people ask me like, how do I build my confidence? How can I, among the people, how can I start some topic and continue the conversation? Wonderful, wonderful. Simran, what kind of advice people ask you for? Yeah, same thing. How can you speak so confidently? And who trained you and all? They ask me that. Monica, Health. health advice. Prakash ji, Like okay, I'll come back. Sanchit, professional only, I can think. Usually they ask me what type of books do you read, or sometimes, what type of web series or movies. what kind of web series, movies? Yes, very good. So this is like friends discussion. Neelam ji, Generally, my friends are asking how you can manage whole things like a professional and personal life. balance. A balance is great. Sagar, पहले जनरली वीडियोस कैसे बनाते हैं वो पूछते थे, लेकिन अभी इस कुछ दिनों में पैसे कैसे कमा रहे हो वो पूछ रहे हैं। very दोनों good. चीजें। Good. So always remember the advices people are asking for. They feel that you are very strong in that area. इसलिए question डाला है. Yes. Okay, that's another way to know what do you love. Next question is, what is the natural talent to you? So आपको क्या लगता है आपकी strength क्या है? Now again, this is a difficult question because people will try to write rata resume answer, which I don't want. So what I tell them is, let's say you are in a cousins together, you are in a party or in office में कहीं पे हैं, so there would be certain things people would tell you to do because they feel you can do it the best. मतलब जैसे नहीं घर में कोई काम होता है तो उसको बोला तेरे को यही काम करना है, तेरे को गेस्ट का लिस्ट बनाना है कि कौन कहाँ से आ रहा है और उनका ट्रैवल अरेंजमेंट करना है. Just an example in the house party. So what kind of work your friends will put you into? Always friends, family, because they feel you are very powerful there, and that's what I want you to write, that you are very good at. So I extend this like, what is that one thing which is very easy for you and which Very others easy for face difficult? Correct. So आपके लिए piece of cake है, but Yes. others अरे तेरे से हो जाएगा, हमसे थोड़ा time, why don't you do it? What kind? So that's the another thing you got to write in the answer. Then sixth question is, what are the different unique life situation you've gone through? Now इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उनको जिंदगी में पीछे मुड़ के ये बोल रहा हूँ कि देखो कि अपनी जिंदगी में क्या क्या तकलीफें तुमने जी है. Okay, once they go through that pain in their life, the pain will give them some. So this is an emotional trigger. मैं उनको emotions में लेके जा रहा हूँ. And pain is given to them for learn something. So they have to write what pain you have gone through. Now अभी तक this all 6 questions are related to love only. What do you love? Now I want to know what they are good at. So what are you knowledgeable about? What are your skills? क्या क्या आता है आपको? Your skills can be learned. Then I give an example. A skill can be learned 3 ways. One, your college degree, because college is teaching something. Skills can be learned through your profession. हो सकता है आपने computer engineering की, but you're working in HR. But so you learned HR in office. Or sometimes you do some certification or courses, simple certification courses under some course. Like today, you're learning how to write a book. So again, always remember, after every example, you got to give some examples. और वो example रट्टे हुए होंगे तो भी चलेगा, but every time you have to use the same example because people are changing. Yes. Every batch there are different people, so it is maybe monotonous to you, but for people it is new.
Okay, that's the question number 7. Question number 8, again, what is the one message you want to share with the world? और इसको मैं कैसे समझाता हूँ कि लेट्स से पूरी दुनिया में टीवी या मोबाइल के ऊपर व्हाट डिसाइड्स कि you have 10 seconds reel will be played on every mobile on the world. What message would you give in that reel? क्या Be बताओगे in the दुनिया को? present moment. Be in the present moment. Wonderful. Know your potential, know your worth. Never settle your for less than you deserve. Yes. So let them write whatever. So what do you see? No, ये सब क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन तो उसने जिंदगी में कभी खुद ही नहीं सोचे थे, हम उसको सोचने में मजबूर कर रहे हैं. So you are taking him into an emotional journey inside him or her, and that's where the conversion and happiness of super duper feeling, delight feeling start coming in people when they do this exercise. क्योंकि इतना उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं जितना अभी मैंने 15-20 मिनट में सोचने को मजबूर किया. Now comes the main important question. नहीं, एक क्वेश्चन फ्यूचर से आता है, which you also asked me कि what professional courses do you want to do? So I write what do you want to become, and whatever you want to become, for that what kind of courses you should be doing. आपको फ्यूचर में क्या बनना है? आज के 10 साल बाद में where do you see yourself? And to become that, do you need to learn something? Yes. तो क्या सीखोगे उसके लिए? क्या-क्या सीखना चाहिए? And that's what the question comes in. Okay. Now, if you once these 9 question comes in, so when you are doing book coaching to someone, आपको ये 9 questions करवाने हैं पहले. So let's say you ask a question, give an explanation, an example in 30 seconds to the person, and you give them that person around 1.5 minutes to write the answer. So you give 2 minutes per question. Right now there are 9 questions. Approximately 18 minutes are gone. 18 मिनट हो गए, वो लिख रहा है, आप सवाल पूछ रहे हो, वो लिख रहे हैं, वो आप सवाल भी लिख रहे हैं. Now comes the important question number 10, which says, I want you to go back and read all the answers from question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then you start finding a patterns out of it. इसमें common क्या है? What is common in this all? And when they find a pattern, that's what is Ikigai all about. What they इस topic love, को what is the simple passion? Yeah. क्योंकि हमने अभी क्या किया, उसको पूरे पैशन स्किल्स पे क्वेश्चन पूछे डिफरेंट एंगल से. इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी. Whatever repetition comes in, he should be writing book on this topic. And I'll tell you, 90% cases में it will be their deep passion or profession. इन दोनों में से एक ही निकलेगा automatically. So basically, if you see, I'm framing people as a book coach. We are framing people in their most strongest area. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में लेके जा रहे हैं. सो साइकोलॉजी की बात समझो. सो साइकोलॉजी में मैं उसको नहीं बोला कि let's say when I'm working with Prakash, I'm not telling him write book on designing. Prakash, I can say it straightforward because I know he can easily write book on designing very quickly. In my first call, I can say ki Supriya, you should be writing book on logistics, which I did not say. What I do is I take people through this exercise. When they self-discover this in the question number 10 in 20-minute process, then they are convinced about it. कि हाँ, ये तो जबरदस्त है. I think I should write on that. So ये बात मैं उनको एक बार में बता सकता था, लेकिन it will not work. Always remember, as a coach, you can't tell people what they should be doing. You need to help them find out that what they should be doing. Then they will take results. बोला काम करेंगे, actions लेंगे, तो result आएगा. But if you start telling, then करेंगे नहीं वो लोग, काम नहीं करते. हमको तो बुक लिखवानी है. So ये उन्हीं को टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा. And then you tell them कि चलो ask questions. What is the book you want to write on? You got, so when I was telling you the process, I was also teaching you the mental, psychological thought process behind asking every question. What is the psychological thought process? Why this every question has been decided? It is basically to make him feel very important in his own life. And who is making that happen is me. So the trust on me goes up very high. And when the trust is very high, then book will happen very fast. Okay. So we are in the entire process, we are working on trust. So what is the learning out of this exercise you have? क्या सीखा इस exercise करने से? And everyone has to share compulsory. So I'm very happy that you found out something about yourself, because ये process का काम ही है कि आप अपने बारे में अच्छा जाने. That definitely is a right thing. But more than that, I want
you to share something which is, as a coach, what you're doing with people's mind and human psychology and the process of human psychology में उसमें कुछ सीखा क्या? Because ये exercise आपको लोगों को करवाना है, so you have to go one level above than this exercise. Above जाना पड़ेगा, एक level ऊपर जाना पड़ेगा आपको इसके. Yes, Sanjit, what did you learn? I just realized that when you were asking us questions and you are making us think, everyone is eager to tell and talk. So I've understood that when you let the person talk and you are genuinely interested, because people love talking about themselves only, and it is everything Wonderful. about themselves as the spotlight effect. So when we let them talk about themselves, they enjoy the conversation more, because you become a conversationalist by listening more and speaking less. So when he feels special, then he is entitled to listen to yours, is what I. Wonderful. So when you listen more, allow people to talk, when you ask question, people will discuss. तो उससे कैसा होता है कि एक पूरे रूम में एनर्जी बनती है, जबरदस्त एनर्जी बनती है, and time passes very fast. ये 25 मिनट कैसे निकलते समझता नहीं है, because everyone is thinking and you give them chance to talk. But Sanjit, one important learning from my side to all of you here is on the sharing Sanjit did. Always remember, some people would always love to talk more than what you want them to talk. Okay, and you have a time pressure, because as a coach I know मेरे पास ये इतना ही time है, so it has to be controlledly done. Now let me tell you how I handle today. So instead of 9 question में मैंने आपने देखो एक ही question की sharing ली. It depends on time. Let's say अगर, so that's the power of a coach. So इसी session को अगर मुझे 4 घंटे खींचना है, यही वाला session. Then जो you will 20 ask minutes में करना है. all the sharings. with Every each and question I'll every- ask a sharing. Yeah. And every question will take a learning. Learning. Every question will dig deeper. Every question I'll take it for 15-20 minutes. There are 10 questions. हो गया 3 घंटे का session, 3.5 घंटे का. But I know I need to finish in 20 minutes. Then I will only take sharing on one. So always remember where to take a share is also very important. So you are taking sharing just to keep them involved, or it's a tool है, or you have to manage your time too as a coach. So timing के point of view से आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं, allow नहीं करना लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने. Okay, it has to be balanced activity. What else? Who want to share? What did you learn? But very good sharing, Sanjita. Yes, Supriya. Focus on the strategies to help our the client to reach a specific goal, and focus on the inner thought, self-belief, and the behavioral pattern. Wonderful. Very good. So आपने ना पहले outcome decide किया हुआ है. What she said is, मैंने outcome decide किया हुआ है, but मुझे वो outcome उससे बुलवाना है, मुझे नहीं बोलना है. Like take an example, आपके घर में एक छोटा बच्चा है. Let me take very vague example. Okay. और घर में पार्टी चल रही है, and there are elders sipping the drinks. And घर में छोटा बच्चा है, समझो 4, 4.5, 5 साल का, and he says, I want to drink that. He doesn't know what is this. How will you handle the situation? There is a one parent है अंदर बैठ नहीं. So we are very intelligent parents. So how will you handle the situation? हमको पता है कि उसको ये बताना भी नहीं है क्या है, और उसके बावजूद भी हमको ये समझाना है कि ये नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं है. So the focus and end result is decided, but you get that person talk and say no, this is bad or this is good, whatever. So आप as a coach हमारा आंसर पहले से डिसाइड होता है, हमारे मन में इनसे क्या करवाना है, and then we work on it. So in a very typical word, this call also be called as a brainwashing. But यहाँ पे हम सामने वाले के बेनिफिट में कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. It's a power. What I'm doing is I'm brainwashing you in a specific direction, but I have a very good intent to help you grow. So as far as my intents are very good, God will also give me more power to do that, and it will also happen. अगर मेरा इंटेंट गलत होगा तो होना बंद हो जाएगा. वो बोलते हैं ना कि सिद्धियां तब तक काम करती है जब तक इंटेंशंस अच्छे हो. ये सिद्धि है ये. So मिल गई आपको पता है सामने वाले का ब्रेन कैसे मोल्ड करना है, but you have to think first about them. तो आप डिसाइड करो क्या करना है, फिर वो अपने आप उस डायरेक्शन में काम करने लगता है. बट स्लो एंड स्टडी होता है. Yeah. मतलब यू कैन नॉट से कि एक ही कॉल में हो जाएगा, एक कॉल में नहीं होगा तो चले, we'll discuss in the next call. Have patience. What else? Want to share? I would like to share
Kailashji. So sales per se, people fear sales. I was also in that frame 6 years back. So thoda seekha hai. And today I think I got the logic behind how sales actually happens. So logic is the door, it is an entry, but logic काम नहीं करता. Logic will not allow them to pick up the card and swipe. And pay. So No. वहां पर तो एक बार door खुल गया तो then play the emotion card and then logic, like how pendulum you said, and then they will be Correct. finally convinced what trust बनाना है. Trust बनाने के बाद then they are completely Yeah, सर्व से शरणागति जो बोलते हैं ना. correct, correct. She got it correct. Huh? This is what the truth of sales is. Yeah. जितने अभी now next time when you go and handle any successful coach who is wonderful in selling, आप देखो पेंडुलम थ्योरी यूज करता है. पहले वो लॉजिक बात करेगा, लॉजिक करेगा, लॉजिक करेगा, लॉजिक सेटिस्फाई करेगा, दरवाजा खुल गया, फिर वो आपके दिल में उतरेगा, फिर इमोशनली बात करेगा, दिल जीत लेगा, फिर क्या है 5 लाख 10 लाख 25 लाख जो मांगो वो दे देते हैं. Blair Singer also says when emotion is high, intelligence is low. They don't think logically. Yeah. But you win the intelligence first. Yes. So it yes, doesn't yes. become a roadblock. Correct. तो पहले इंटेलिजेंस जीतो, फिर इमोशनली हाई लेके जाओ. एक बार हाँ. इमोशनली हाई हो गए तो then they surrender. Correct. Okay, so wonderful thing. So sale doesn't happen when you start selling. Sale happens every moment. It's called seeding. Seeding बोलते हैं उसको. You keep seeding, you keep seeding, you keep seeding, keep seeding. आप बीज बोते जा रहे हो, पानी दे जा रहे हो, पानी दे. बीज बोया है, पानी देते जाओगे, तो एक दिन तो पत्ता लगेगा ना उसमें. हाँ, nurturing. Nurturing. Yeah, you keep doing Seeding and nurturing. seeding and nurturing. Sale is last. So wonderful salespeople do wonderful seeding and nurturing. Always remember. Yes. And they have patience. Sir, I have a question. Can I ask? Yes. Sir, if somebody is not able to do it in one sitting, as you said, 20 minutes, and they ask us, I would like to sit and discuss with you everything, and because I have not understood. Okay, it could happen if it's a group, maybe. If it's one-on-one, I think that may not be the case. But if it's in a group, and if they ask me, I want to have one-on-one call and discuss with you because I'm not able to find out, they need help. So we have to repeat the same process with them, right? As you have taught us. We can, or rather, उस केस में मैं क्या करूँगा कि I'll tell them whatever sheet you filled in, you send me the sheet. Okay. Take a photograph and send me the sheet. I will read it. क्योंकि ये शीट पढ़ने के बाद आप इंसान को अच्छे से पहचान जाते हो, क्योंकि आपने उससे challenges लिखवा लिए, problems लिखवा लिए, future लिखवा लिए, सब कुछ तो आ गया उसका. आगा past, present and future सब लिख दिया उसने उसके अंदर. You read this 10 question, you know that person well, and then you get into a call. So instead of you tell them, why did you write this answer? So as a coach, we cannot tell them what they should be doing. We need to ask them. So आपने ये क्यों लिखा? When you write question number 10 में pattern है, तो why did you said this is a pattern? So ask questions on the answer on the sheet rather doing the question answer again. और वो बोले नहीं मैंने तो किया ही नहीं, या मैंने लिखा वो कागज खो गया. So बच्चों जैसे बहाने करेंगे लोग. स्कूल में नहीं करते बच्चे, वैसे करेंगे लोग. बोले no worry, we'll do it again. Have patience. बोले चलो फिर से करते हैं इनका. Spend 20 more minutes. Dog ate it this. Yeah. Nice. Thank you. Yeah. Okay. So who else want to share the learnings of this exercise? Not what you learned about yourself, but what you learned about the human mind and the process. Yes, Neil. How to tackle the people, मतलब cases. जैसे कि जो कोई भी हमारे पास आता है तो उनको हमें वो प्रोसेस क्या है वो कैसे उनको समझाना है. If they are suppose they are not interested but उनको they want to do, तो how to learn, how to earn. मतलब कोई भी बंदा है जिनको बस अपने नेम फेम नहीं चाहिए, they want name fame money abundance, तो वो कैसे कर सकते, that I have learned from this process. And one more thing is that how to do bonding with people with logic, then pendulum, emotions and जो आपने बताया ये जो ऐसे कि उनसे bonding कैसे मैच कर सके, और दूसरी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन कि उनके इमोशंस और इसके साथ अगर हमने प्रॉपर कर लिया, सो हाउ दे विल गिव अस सेल. Awesome. इसमें एक और चीज मैं बोलता हूँ, जब लिखते हैं ना लोग, when you tell people to write and they have to, you force them to write. सब लोग लिख रहे हैं. So when people write,
another thing happens is people have forgotten writing. Either they type or key in on computer keyboard or mobile पे. जब आप किसी को writing के लिए बोलते हैं ना, suddenly I'm telling you very human psychology. Suddenly you are asking question, they are writing answer. They are writing. So somehow subconsciously they assume you are a teacher and they are students. क्योंकि बचपन से स्कूल में यही किया ना, टीचर बोलती थी बच्चे लिखते थे, टीचर बोलती थी बच्चे लिखते थे. So you are also programming in them that I am teacher here and you all are students. So in the end, as whatever teacher says, you have to follow. So transactional analysis, where I'm putting myself above them. So I'm decoding all those principles to you, not the exercise, but how this exercise is very powerful exercise. So writing makes it powerful. So इसलिए आप देखो कि जितने भी बड़े coaches हैं ना, वो most probably pen and paper पे लिखने को force करते हैं. वो mobile notes. The reason is, NLP point of view से भी देखोगे ना, as soon as I write and I am asking question, you are writing answers. That वो स्कूल में बचपन के 14-15 साल 15 years we studied in school, Yeah. and this is what happened with us. Teacher asked a question, we wrote. Teacher asked the question, we wrote the answer. So suddenly even Sanchit was asking this question. हम सब उससे एज में बड़े भी होते थे ना, तो we would have started presuming Sanchit as a teacher because वो question पूछ रहा है, जवाब हम लिख रहे हैं. So then Surrender. age goes away here. That's another NLP comes into picture in the process of writing. So that's why we force people to write the answers. Surrender Subtle. आ जाता है. हाँ, subtle surrender आता है उससे. These are all strategies. What else? Anyone wants to share anything? What else you learned from the exercise? The takeaway is that approach to the client, and second, discover the client's need. It will Help him be- discover his own needs. हाँ, help him, and then provide the solution. Then नहीं, it कभी will कभी be- ऐसा नहीं बोले बुक लिखने के बाद वो आके बोले आप ही ने तो बोला था ये बुक लिखो, तो मैंने लिख दिया, मेरी बुक तो बिकी नहीं, मैं क्या मैंने नहीं बोला था. You did that exercise, you got the result कि मुझे ये किताब लिखनी है, and we follow the process, and that's a Japanese process we follow. So you go to Japan and fight with these Japanese, they may got you things wrong. This is another way. So another thing is when you give structure and framework, people start trusting a framework and support this framework with something. So it is not exact ikigai. जो हमने किया ना, it is inspiration coming from ikigai. But I give it ikigai because suddenly you say it's ikigai and Japanese concept and kaizen. दो चार बड़े word बड़े लोगों के नाम attach कर दो. Then it works very fast. So जैसे एक example मैं और बताता हूँ आपको. प्रकाश जी को सिखाया मैंने वो. He would remember that. So there's one principle I learned from one of my coaches in Australia, which is called spiral dynamics. And spiral dynamics is taught very few people in the world, very powerful. आपको भी सिखा दूंगा, सबको मैं सिखाऊंगा आपको. तो उसमें है ना, किसी भी अनजान इंसान को 2 minutes के अंदर आप internally core से पहचान लेते हो. You look at the person, unknown person, first time meeting, and you know his characters. बात भी करने की जरूरत नहीं. It's the most powerful thing in the world. So when I started teaching that, so लोगों ने importance है spiral dynamics. Then I was doing a research. Then I found कि ये एक बार उन्हीं कोच ने बताया कि एक बार मैंने इजराइल जाके मोसाद को सिखाया था. तो मैंने अपना नाम चेंज करा. Now stop saying spiral dynamics. Now I said I know one course which was invented by Mossad, and Mossad is world's most intelligent army by Israel, and Mossad uses to identify people in 1 second. 30 second के अंदर वो identify करते हैं. जैसे Mossad डाल दो ना तो लोग बोलते हैं वाह Mossad. हाँ Mossad. So sometimes when you attach things to Ikigai, Kaizen, those all things, no, तो उसमें लोग खुश हो जाते हैं. जैसे मेरा एक sales method है जो मैंने पेटेंट के लिए डाल रखा है, which I discovered. अभी मैं बोलूँगा हाँ मेरा sales method है, कोई value नहीं है. Now what I'm trademark ले रहा हूँ उसका, we are calling it spider web sales method. और मैं उसका trademark और पेटेंट डाल दूंगा. तो simple process है. अभी जब लोग बोलूँगा I have patented a trademark process called spider web sales method, तो लोग बोलते अच्छा ये क्या है patented. कुछ बड़े-बड़े ऐड कर दो ना, लोग इंपॉर्टेंस देते हैं चीजों को और कुछ नहीं. उसके बिना भी वही मेथड है, बिना उसके. I'm just telling you how do we play with human mind, and the purpose is very simple. I want you to get results. And if I know that अगर आपको रिजल्ट लाने के लिए मुझे थोड़ा ऐसे टेंट्रम करने पड़ेंगे तो मैं करूंगा, but end of the day I need result in your life. So that's why Kaizen के साथ attach किया है. Framework दिया है, question answer structure दिया है. We call it a framework. So जैसे आप framework बोलते हो, बड़े-बड़े words use करते हो ना, heavy words. So people automatically surrender. Okay, those are principles of coaching. So whatever you do in a coaching, there should be framework. Come up with unique names.
और एडवोकेट से बात करके उन यूनिक नेम को ट्रेडमार्क करवा लो और फिर बोलना शुरू करो दैट आई हैव ट्रेडमार्क एंड फॉलो इट. सो उससे क्या होगा, सडनली यू विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ एज अ कोच. मतलब ये यूनिक कोच कि पेटेंट्स हैं इनके नाम पे, इनके खुद के मेथड्स डेवलप हैं, ये है वो है. सो दिस ऑल प्लेइंग विद द माइंड, बट इट वर्क्स एंड ऑल बिग कोचेस डू. सब लोग करते हैं, बताते नहीं है कि सब लोग ऐसा माइंड गेम्स खेलते हैं, बट इट इज वेरी नेसेसरी. ऑलवेज रिमेंबर, मैं बार बार बोलूंगा, द पर्पस इज टू बेनिफिट योर लाइफ. दैट इज व्हाई इट इज ओके. एज फार एज मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि आप सबकी जिंदगी बदले. जब आप ये किसी के साथ करोगे तो सामने वाले की जिंदगी बदलोगे. इट्स ओके. ओके, सो इट्स लाइक कृष्ण ने अर्जुन से भी लड़ाई करवाई थी ना. अपने ही चाचा मामाओं पे तीर चलवाए थे उन्होंने उनसे. तो ठीक है, एज फार एज कृष्ण कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. हम भी कृष्ण है किसी की जिंदगी. और पर्पस इज वेरी सिंपल, वी आर इनलाइटिंग देयर लाइफ. उनकी लाइफ बदल रहा है. सो दैट्स द फीलिंग यू नीड टू हैव व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल. वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आंसर मैंने दिया हुआ है. आई वुड आल्सो लेट्स डू दिस 5 days. मैं ना आपको ग्रुप्स में बांटूंगा एंड यू विल हैव टू दिस एक्सरसाइज विद अदर पर्सन, जिसमें एक बार आप कोच बनोगे और आप सामने वाले से एक्सरसाइज करवाओगे and then other person would then you do with other person. So everyone will become one time a coach, one time a coachee, ये पूरे केस में. And you have to rate, because आप दो लोग के साथ काम कर रहे हो. एक बार आप कोच हो, एक बार दूसरे. तो आपको रेट करना है कि how was out of 10 and you give an points of improvement, कि आपको कहाँ पे missing point लगा है. Let's teach each other, because मैंने कहा ना, बुक कोचिंग इज वेरी सिंपल. 5 step प्रोसेस है, जिसमें ना शुरू के स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्टेप अगर अच्छे से हो गया, बाकी आपको मुस्कुराना है कॉल्स में. यस, वंडरफुल, वाओ. लर्न एडजेक्टिव्स, रादर क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स ऑफ वाओ. ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऑसम. तो Awesome. 8 या 9 सिनोनिम्स याद कर लो, रट्टा मार लो, और उसके बाद वाले कॉल में से वाओ. मैं यही करता हूँ कॉल्स के अंदर. अभी मैं आपको मेरी अंदर साइड की स्टोरी बताऊं. बस इसका रीजन ये है कि उन्होंने राइट टॉपिक ढूंढ लिया है. अभी लिखना उनको है, राइट टॉपिक ढूंढ लिया है, लिखते रहते हैं. बस मुझे ये ढूंढना पड़ता है अटक रहेगा ये. आई जस्ट नीड टू विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट योर क्लाइंट इज स्टक इन हिज माइंड. वो जैसे रुकेगा ना, जैसे नेगेटिव बात करेगा, दैट्स अ साइन दैट ही स्टक. कैच द नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव वाइब्स एंड देन थोड़ा सा अलर्ट हो कि अभी मेरे को इसकी नेगेटिविटी को हैंडल करना है. उसके अंदर जाके दिमाग में आई टू किल दैट नेगेटिविटी एंड देन यू आस्क क्वेश्चन. सो दैट इज अ सेपरेट सेशन विल डू. सो इसी सेशन में जो आज का सेशन, आज का मतलब जो आप जब अपने स्टूडेंट के साथ जब सेशन करोगे तो ये एक्सरसाइज होगी. उसके बाद में एक एक्सरसाइज और होगी. 2 एक्सरसाइज एक साथ करते हैं. पहला टॉपिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं. नेक्स्ट चीज हम उनको समझाते हैं कि टॉपिक इज आइडेंटिफाइड, वी नो यू नो व्हाट बुक यू वांट टू राइट ऑन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज who do you want to write this book for? किसके लिए लिख रहे हो? Target audience. Target audience. And it's very simple. People say I'm writing for everyone. मैं सबके लिए लिख रहा हूँ. सबके लिए नहीं. So there's a quote I always say, no one is everyone is no one. When you say I'm doing for everyone, then you're not doing for anyone. So always remember, it has to be very very specific audience. उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बना रखे. It is very difficult for people to think. तो हमको केवल उनको एंगल देना पड़ता है. सो वो क्वेश्चंस है क्या? मैंने आपको आज भेजे हैं क्या? नहीं भेजे. नहीं मैं ग्रुप भेजा. में है ग्रुप सर, में आउटर बेस्ड एलिमेंट्स में है, मैंने ओपन किया है. आउटर नहीं, बेस्ड वो एलिमेंट्स. नहीं, वो नहीं है. वो आउटर बेस एलिमेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है. ओके. अभी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ. सर कल का रिकॉर्डिंग आया है? यू हैव गिवन इन अनलिस्टेड यूट्यूब? नहीं, वो किया नहीं है. रिकॉर्डिंग है लेकिन आउट निकाल Okay. के डाला नहीं है. यूट्यूब जी. डालना है. हाँ, या अनलिस्टेड में है तो वी कैन I'll चेक. share. ठीक है, I'll tell thank you. Pachika to look हाँ into जी. it tomorrow. ओके. ये ऑडियंस सिलेक्शन फॉर्म है, ये मैंने डाला है इसमें. और है ना, हर चीज के फॉर्म्स बनाओ. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू वांट टू बीट द लॉजिक ऑफ पीपल्स माइंड, लॉजिक है ना, व्हाट लॉजिक मींस इज स्ट्रक्चर. Yeah. सो हर चीज का फॉर्म होना चाहिए आपके पास.
Okay. तो सवाल मैं जनरली पूछता हूँ, उन्हीं को नोट करके फॉर्म्स बना, एंड ऑलवेज गिव फॉर्म्स टू मी, एंड अच्छा. पीपल लव फिलिंग अप फॉर्म्स, उनको मजा आता है फॉर्म भरने में. Clarity logical- आएगा ना, हाँ, lot of clarity you get when you fill lot of clarity you forms. get फॉर्म्स में, एंड दे जस्ट कीप राइटिंग फिलिंग फॉर्म. अभी ये जो फॉर्म मैंने दूसरा ग्रुप में भेजा ना, हाँ जी. What are you, who are you writing the book for? Age group, हाँ, language. so अभी मैंने क्या So किया all ये, the demographics and हाँ, इसे सिंपल फॉर्म में. ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया मेरे को? फेसबुक से आया. yeah. When I was running Facebook ads, so I was saying what all question Facebook is asking. वो एज पूछता है, जेंडर पूछता है, सिटी पूछता है, तो जो Interest. फेसबुक पूछता है उसका मैंने फॉर्म बना दिया. Correct. ओके, नाउ दिस इज व्हाट आई डिड हियर इन. सो और कुछ मैंने अपने दिमाग से सोचा कि ये पूछना चाहिए. सो पहला क्वेश्चन है जेंडर, मेल फीमेल एनीवन. एज ग्रुप, कि कौन से एज का ऑडियंस है. लैंग्वेज कौन सा स्पीकिंग है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, व्हाटएवर. जियो लोकेशन क्या है, मतलब इंडियन है, नॉन इंडियन, एनआरआईज हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, व्हाटएवर. रिलेशनशिप स्टेटस, शादीशुदा हैं, कवारे हैं, एंगेज्ड हैं. जॉब टाइटल, सीईओ है, सीएक्सओ है, सेल्स मैनेजर है, ऑपरेशन हेड है, फाइनेंस हेड है, व्हाटएवर. इंटरेस्ट ऑफ योर ऑडियंस, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है. इंटरेस्ट पे आता हूं मैं. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन. एजुकेशन स्टेटस ऑफ ऑडियंस, एमबीए है, ग्रेजुएशन है, 12th है, 11th है, 10th है, साइंस ग्रेज है, व्हाटएवर. देन कौन सी इंडस्ट्री का है, व्हाट इंडस्ट्री इज और शी इज फ्रॉम. ठीक है. नाउ दिस इज टिपिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम फेसबुक. आप फेसबुक में जाओगे ना, ये फॉर्म, ये डिटेल. Yeah. तो फेसबुक से मैंने When we are इंस्पिरेशन doing लिया. और Facebook ads. हाँ, तो फेसबुक ऐड का इंस्पिरेशन है. अभी बाद में मैंने इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हटा दिया है फॉर्म में से. अभी ये लेटेस्ट फॉर्म नहीं भेजा आपको मैंने, क्योंकि दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. सो इंटरेस्ट इज समथिंग वेयर people in your audience, so when I explain, you should explain interest, that whatever people are your audience is interested in, what other areas they are interested in is called interest. जैसे you are writing a book on spirituality, they may be interested in Shri Shri Ravi Shankar. तो उनके और क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं. उनका इंटरेस्ट हो सकता है, दे मे बी आल्सो फॉलोइंग सदगुरु, दे मे आल्सो लुकिंग एट वीडियोस ऑफ शिवा और रुद्राक्ष और हिमालय. दोस आर इंटरेस्ट. लेकिन ये समझाना बहुत डिफिकल्ट है, तो बाद में क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया. अभी नहीं है, अभी के फॉर्म में क्वेश्चन. But algorithm actually catches that. एल्गोरिथम कैप्चर. बट बुक राइटिंग के प्रोसेस में अगर हमने नहीं भी लिखा तो चलता है, Yes. because this form was created for book writing. So this was the only irrelevant question, so I deleted this question from the later phases. पहले शुरू में था ये form. Now, so take them through this exercise, let them think from different angles and come up with the audience. Because when people have clear topic and clear audience, they know specifically कि हाँ मेरा ये problem, ये particular audience के लिए ये book लिखा जा सकता है. And now we do audience के ऊपर. Third question is we tell them to write 25 problem areas of their audience related to your topic. ये 3 step process एक call में होता है. आपका audience book topic selection, audience selection और audience के problems. Generally ये call जाता है 1 hour to 1 hour 15 minute का. 1 hour 30 minute भी जाता है कभी कभी. But as I said, this is the most important call. If they find out the right audience, right problems and right book topic, then book happens automatically. आपको कुछ नहीं करना, फिर book अपने आप होगी. Okay. Now what are the why are we asking problems? हम problems क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझे इसका थोड़ा Pain जवाब points. why are we talking about pain points? Because people are looking for solutions for the pain Correct. points. Correct. People are looking for solutions. So what happens is people would read book for 2 reasons. Yeah. One is they want to get entertained. अब जो मुझे टाइम पास करना है तो मैं किताब पढ़ता हूँ, but उस समय मैं I'll pick up some novel, read a Coffee story table. or something, or coffee table or a poetry book just to time pass. But if I'm looking for some solutions, I'm reading book on sales because I want to learn sales better. If I'm reading a relationship ka book because I want to learn relationship. If I'm reading book on law of attraction, I want to learn law of attraction. If I'm reading logistics, I want to learn logistics. If I'm reading about designing, I want to learn about designing. मुझे कुछ problems है मेरे दिमाग में which I have not sorted and I want to know the solution to this problem. So book writing process में हम क्या करते हैं? We come up with 25 problems. Why we come up with 25 problems? Because we need to make sure that the author is covering all those problems in the book. Because जब reader किताब पढ़ेगा ना, when reader is reading a book, reader would be very happy कि wow, मतलब ये तो मेरे दिमाग में question था and answer मिल गया, question था answer मिल गया. And what happens because of that? They get more clarity, and clarity is power.
So what are you doing as an author? Because you've gone through problems in on your life, or you have clients who are going through the problem because you're solving their problems. So write down all the problems and make sure that you cover all the problems in the book. So when you cover problems in the book becomes very, 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 very powerful. And you People have to have will patience. relate. People will relate and feel as if the author has known me and then they are writing about me only. And that's the very important secret to write a best-selling books. क्योंकि रीडर को लगता है ये तो मेरे लिए ही लिखी है किताब, ऑथर को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? तो उसको नहीं पता ऑथर भी ये प्रॉब्लम से जा चुका है, इसलिए उसको सब कुछ पता है. We all have the same problem. So that's why we go and tell them to write all the problems in the 25, 30. कभी-कभी तो मैं किसी को एक को 100 प्रॉब्लम्स लिखने को बोला था. मैंने कहा smallest problem is okay, but write 100 problems. So, but 25 is good number. Let people write 25 problems. Once they write 25 problems, they need to cover these. They convert these problems into chapters. That's the next step. हम next step पे बाद में आएंगे. अभी ये 3 step process है. पहला helping them identify the book topic. Helping. Now अभी देखो अभी अब फिर मैं pendulum पे आ गया हूँ. Okay, you look at the pendulum. We had a video talking about the structure. We got into emotional topic, which is more of a book topic. जैसे audience problem पे आ गए हम logic पे आ गए फिर. There is no emotion to it right now. We are talking logic a lot now. So we always do crisscross here and there. So people when thinking problem, they are very logical right now. अच्छा ये problem हो सकता है. And sometimes people are not able to think. वो problem नहीं सोच पा रहा है. So अगर कोई इंसान 10 problem नहीं लिख पा रहा है ना, तो it's a sign that they have not selected the right topic. We are telling him to write 25. If he is not able to identify 10 problems of their own audience, वो book कैसे लिखेगा? Then you have to go back and sit with him and understand where this person has gone wrong. Because a lot of people think कि I will do research and see. Research से book late होगी. Other कभी नहीं होती है. That's a vicious cycle. So always remember people have to easily write 10. So 10 problem 10 मिनट में तो आनी चाहिए. अगर 10 मिनट में 10 प्रॉब्लम नहीं आ रही तो अलर्ट हो जाओ कि इसने गलत टॉपिक सेलेक्ट किया. Sometimes they will be in denial mode also, no? They don't want to accept. No, so take them back to the exercise. हाँ, yes. मतलब वो जो अपनी एक्सरसाइज थी ना उसको बोलो क्वेश्चन नंबर 10 जो पैटर्न था ना उसमें क्या-क्या पैटर्न आया बताओ. हाँ जी. तो उनको What बोलना चाहिए कि when they are facing difficulty while doing that 10 questions, उनको बोलना चाहिए कि probably you have not selected your topic properly, right? No, can we think so direct denial mode में कभी नहीं जाना है क्लाइंट के साथ. हाँ. So you say that can we relook at your options? Okay. और अगर वो persistent है ना तो उसको बोलो then let's do one more thing because हमारे स्ट्रक्चर के अंदर हमको 100 क्वेश्चन फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है. If you are not able to do 70 also we will have to do this exercise again. So आप उसको अगला जो सेक्शन आने वाला है वो टेस्ट करके डाल कि अगर आप 70 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं that means you are able to build up. But if you are not able to do 70 questions, then we will have to relook at this exercise again and do it again. Sure. Direct denial कभी भी client को नहीं करना पड़ता. जैसे आप denial mode में जाते हो ना, तो they become offensive. हाँ, that is what. So Selecting the right words. So subtle. can we look at your options? What all options you left? अब जैसे example में लेता हूँ. समझो उसके एक health आया था and वो health coach है example. और दूसरा topic आया था relationship. And उसने relationship लिखा और वो 10 problem नहीं लिख पा रहा relationship. तो मैं उसको बोलूंगा अच्छा show me what all options you had. Wow, health. Wow. Was such a nice topic. And what made you decide कि आपने health नहीं choose करके relationship choose किया? I was curious about it. I want to know more about it. मेरे को मन में बोलना है कि अरे भाई किताब तेरे को health पे लिखी. हाँ. चला गया. मैं ऐसा बोल नहीं सकता ना उसको. मैं ये नहीं बोल सकता. Yeah, I true. put it in a bright and positive frame of the word saying that अरे it is a wonderful topic. What made you decide? अगर वो फिर भी persistent रहता है नहीं मुझे relationship ही लिखना है तो बोलेंगे okay I think we'll get to know more when you go to a framework because framework would require 100 questions to be written and I hope you will be able to write 20. If you're not able to touch 70 we may have to relook at the exercise again. तो आप उसको hint दे दो कि मैं बाद में फिर से करवा दूँ. हाँ. करवाने वाला हूँ. अगर आपने 70 नहीं अगर उसको करना है तो 70 लिखने पड़ेंगे और 70 कर लिए उसने. If he is able to write 70 questions तो book तो होना ही है. Okay, so it's playing with the mind most of the time. सर एक चीज शेयर करना चाहूंगा मैं सबके लिए. ऐसा बहुत सी बार होता है कि अभी सर के साथ जब मैंने वर्कशॉप किए हमने तो
बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें क्लियरली समझता है कि इसको इस पे लिखना चाहिए बुक, लेकिन फिर भी वो इंसान बोलता है कि नहीं नहीं मुझे उस पे लिखना है। तो हमें समझता है कि अगर ये उसके मन से जाएगा तो इसका नुकसान होगा शायद। तो उस टाइम पे हमें ये समझ जाना पड़ता है उनको कि बहुत नहीं, वो हमें अंदर से लेकिन अंदर प्यार हंसी से, आती है। हाँ प्यार से समझाना पड़ता है। यस। और दूसरा देखो, एक और थोड़ा मैं बिजनेस एंगल की बात करूं, तो जनरली ये जब हम ग्रुप वर्कशॉप्स करते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज होती है हमारे छोटे प्रोग्राम में होती है, विच इज अराउंड 2000 रुपीज 2500 रुपीज के प्रोग्राम में ग्रुप में हो रही है एक्सरसाइज। मुझे पता होता है ये गलत कर रहा है, नहीं समझ रहा है, मैं समझा भी रहा हूँ नहीं समझ रहा है, तो मुझे पता है कि इन केस दिस गाय साइंस अप फॉर माय बिगर कोचिंग सेशन विच इज 20-25,000 फॉर बुक राइटिंग, मैं उसको जबरदस्ती करवाऊंगा, ठीक। इन केस इट डजंट साइन अप, देन गॉड ब्लेस हिम। He will come back later. बाद में गॉड आएगा ब्लेस 2-3 हिम। साल के बाद. हाँ, तो मुझे पता होके भी कभी कभी मैं, क्योंकि है ना देखो वहां पे ग्रुप है and I need to value my time. So I have given, even if I charge 2,000 rupees for this 4-hour workshop, which I could have, given 4 hours to my premium clients, but मैंने यहाँ दिया है because it's a collective decision. So like 20 people are paying me 2,000, so it is 40,000 rupees for me. It is okay. So लेकिन मुझे ये भी नहीं है कि I cannot be too persistent. अगर मैं यहीं पे बहुत persistent हो जाऊंगा, then what happens in next step, which is 1-to-1 now. So थोड़ा सा हमको समझाना पड़ता है, नहीं समझ रहा है तो we'll have to leave him की चलो कोई बात नहीं. And if he signs up, मेरे साथ कितने लोगों ने बुक साइन अप करने के बाद मैंने उनका टॉपिक चेंज करवाया, पहले नहीं करवाया मैंने, साइन अप करने अब तो तुमको यार अभी सही करना पड़ेगा. मैंने ऐसे भी किया है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, अचानक से दिमाग में आया मेरे को, कि व्हेन पीपल आर फिलिंग दिस फॉर्म, नो, द लैंग्वेज सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में है ना, एवरीवन वांट टू राइट बुक इन इंग्लिश. Rather, market is very big for regional languages. Agar you write book in Marathi, Telugu, Tamil, Hindi, the market is bigger and your audience is bigger. So what people do, they will end up writing book in English, and it is okay to write in English. But इसमें कैसा होता है, your English has to be good. नहीं तो फिर editing पे बहुत cost लगता है. Editor will charge lot of money to correct the English. So when you identify कि इसको ना regional language में book लिखना चाहिए, so you push them to write in a regional language. Again, softly. वो करवाना पड़ेगा, नहीं तो बुक कंप्लीट नहीं होगी. एंड डू नॉट फोर्स. समटाइम इट इज ओके फॉर यू टू अलाउ पीपल टू गो देयर ओन वे. ये जरूरी नहीं है, देखो लाइफ में हमें जीतना जरूरी नहीं है, रिलेशनशिप जीतना जरूरी है. सो ऑलवेज दिस इज अ कोट कॉल, यू वांट टू विन अ रिलेशनशिप और विन एन आर्ग्यूमेंट. You want to win a relationship, not the argument. Let's lose the argument. So sometimes it may happen that you are having an argument with your coachee, and your argument means you're trying to make them understand what is right for them, but it's okay if they don't understand. Let's win a relationship, because उनको life में कोई support ही नहीं करता. That's a problem. So let you support. You tell them whatever you feel, then you tell them, okay, let's go by your way, and if there is someone, I'm always there, don't worry. And in case they fail, then you pick them up again and take them to the journey again. मेरे साथ कम से कम 25 या 30 लोगों ने पूरी बुक लिखने के बाद में बुक स्क्रैप किया, फिर से बुक लिखी उन्होंने. Because then they realize later on कि, and majorly the reason was language. Selection of a language was wrong, nothing else. क्योंकि बाद में बहुत गड़बड़ हो जाता है selection of language. So language selection अच्छा कर. दूसरा ना एक और important point है, always tell people जो coaching या whatever work you do, what language your audience is speaking today. Because हमको बुक उसी लैंग्वेज में लिखना है. Let's say I work with यूपी बिहार के लोगों के साथ काम करता हूँ मैं, which is typical North Indian हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन, और वहाँ इंग्लिश बुक लेके जाऊंगा, तो दे वोंट लाइक माय बुक, बिकॉज वो पढ़ ही नहीं पाएंगे बेचारे. देन द इम्पैक्ट आई वांट टू क्रिएट, आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट. सो ऑलवेज लुक एट एन ऑडियंस एंड देन डिसाइड द लैंग्वेज. नॉट बिकॉज इंग्लिश में, डेफिनेटली इंग्लिश में लिखने से आपका थोड़ा ब्रांडिंग बनता है, बिकॉज यू रिटन बुक इन इंग्लिश, अच्छा से इंग्लिश में बुक लिखा है, बट यू डिसाइड ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट और इम्पैक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. देन यू डिसाइड. एंड अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, फिर भी मुझे इंग्लिश में लिखना है, एग्जाम्पल, then you tell them, okay, write in whatever language you are writing, write it, but we have to hire an editor or translator to translate in English. That would be additional cost, but वो समझाना पड़ेगा हमारे को. And sometime if it is required, then we do it. मैंने कई बार ऐसा भी करवाया है कि हिंदी में लोगों ने बुक लिख के भेजी है, फिर हमने उसको ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश. But the cost of translation is an additional cost, which we tell them from the front, day one.
We tell them write in Hindi because your Hindi is good. But they say no, हमको तो English ही करना है because our audience, we want to show off to audience that we have written in English. If that is the case, okay. Then we write in Hindi, we'll get it translated in English and get it corrected, and we'll pay whatever amount translator is taking. So topic selection, audience selection and problem. ये जो session है ना, एक session, ये अगर अच्छे से हो गया, even if this session require 1.5 hours to give it. ये session अच्छे से हो गया तो next session would be again 1.5 hours, and उसके बाद में nothing happens. फिर वो तो accountability है, nothing else in the book writing. तो यहाँ पे उनको समझ में आ जाता है मेरी audience कौन है, और next session जो होगा audience अपने कोची के साथ, तो वहाँ पे हम उसको framework बनवाते हैं. So basically ये तीन ही section, तीन ही trust call important है क्योंकि वहाँ पे वो pay करता है. बुक सिलेक्शन कॉल इंपॉर्टेंट है कि आप बुक सेलेक्ट करवाते हो, ऑडियंस सेलेक्ट करवाते हो, और इन केस उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है तो दिस सेशन हैपेंस वेरी फास्ट, और समटाइम यू वांट टू skip इज ओके. एंड थर्ड इज फ्रेमवर्क कॉल. बस उसके बाद में बुक इज डन फॉर 30 days. देन यू जस्ट गो फॉर अकाउंटेबिलिटी. हाउ डू यू टेक अकाउंटेबिलिटी? आई एम गोइंग टू टीच यू, बट दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. देयर आर 2 forms, you will get it free, and make sure that they follow the process. Not because it is important to them, it is also important to you. आपके लिए भी important है. तो हम As a लोग ने अभी तक we did video call and framework call. Trust call बाद में करेंगे सर. ट्रस्ट कॉल मैं बाद में करवाऊंगा आपको, हाँ क्योंकि जी. ट्रस्ट कॉल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिकॉज ट्रस्ट कॉल इज द कॉल वेयर दे ये दिस कॉल जो व्हाट वी लर्न टुडे हाँ. हैपेंस आफ्टर दे पे. Okay. पेमेंट हैज कम. जो वीडियो कॉल है वो फ्री में जाता है, Yes, lead call. लीड कॉल है, तो इसलिए उसको जाने दो. और ये हो गया है. ट्रस्ट कॉल को मैं डिकोड करूंगा आप सबके लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से आपको उस कॉल में बात करना है, where they they are okay to pay you the money. Sure. Once that happens, then ये तो सब इसके बाद में 2, so basically four calls happens important. पहले वीडियो है, ट्रस्ट कॉल है, then you have this Framework. no, framework के पहले you have audience and topic call, then a framework call, and then done. Then accountability calls होते हैं 6 या 7, and book happens. So these 2 calls are important for book to happen. Trust call is important for they pay you, and then it's a simplified process. So the lead call is a call, or it's a recorded video that will go? Preferably is a call. कौन सा इसका बोल रहे हैं आप? The first step है lead video वो call. तो वीडियो, it's a video, always a video. Okay, and we just talk what you have shared in the Template. in that video. You हाँ, have वो shared. जो 10 chapter 10 question उसका एक टेम्पलेट का Process. वीडियो बनता है 15-20 मिनट का, Formula. एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. दिस इज बेसिकली व्हाई, देखो वो वीडियो हमने क्यों बनाया है, व्हाई ही शुड स्पेंड 1 hour विद यू. हु आर यू? आपके साथ क्यों स्पेंड करेगा? So when he Yes. listens to that video, so are you writing a book? Are you interested in writing a book? Yes. So then I take a permission. Can I send you a small video which would help you, your writing process? It will increase your speed of writing. It will also give you a lot of clarity in writing. And can I share with you? So most of you say, हाँ, भेज दे video. And I send the video. वो video में मेरा photo होता है, मेरा explanation होता है. So this is where the trust starts. वो video भेजना पहले जरूरी है, क्योंकि trust call में दे cook होके आते हैं. So जैसे when जैसे tell them that there will be a trust call, that will be the step 2, which I want to schedule with you. हाँ, so trust call हमारा internal नाम है, वहाँ पे trust call नहीं बोलते, हम first consulting call बोलते हैं, which is free. There is no charge for first consulting call. Okay. So while sending the video, we tell them that if हाँ, you look at the video, and I want to have a Oh, discussion with okay. you, because I want to tell you a lot of things about book writing with my experience, because I am a part of a community and group where we have, now whatever I say you can say as a community. So I'm a part of a community where we have taught book writing for more than 20,000 people as a community. So the 20,000 लोगों को लिखा है, तो we know what problems would have. So I want to talk to you on a one-to-one call and tell you entire process how it happens. So you look at the video again, and it would require 45 minutes to 1 hour. So I'll send you my calendar link to book it. मैं आपको process दिखाता हूँ quickly. Though I'm going to take you technology में मैं वहाँ लेके जाऊँगा आपको मैं. So अभी ये देखो. Are you see WhatsApp? मेरा WhatsApp देख रहे हो? हाँ जी, we can see WhatsApp. Let's take this as a case. So जैसे ही वो मेरे को
मेरे को लीड आती है, कोई है सोनिया भाला, आई डोंट नो हर, तो उसमें थैंक यू सोनिया फॉर शोइंग फॉर इंटरेस्ट, प्लीज बुक माय कैलेंडर लिंक, यहाँ पे कैलेंडर लिंक आता है। उसके बाद में 2-3 मैसेज डाल देते, देन आई वांट टू नो व्हाट योर बुक इज अबाउट, व्हाट्स इंस्पिरेशन ऑफ राइटिंग अ बुक, इज योर मैन्युस्क्रिप्ट रेडी, इज योर फर्स्ट बुक रेडी, एंड थैंक यू। तो ये सब क्वेश्चंस के बाद में दे हैव टू बुक अ कॉल। लेट्स से अदर, तो अभी इसने भरा नहीं, मुल्की अलमुशी, कोई बड़ा दिखा, उसके साथ बहुत डिस्कशन। खालिद, ये क्लोज केस है, ठीक है, ये मेरा केस क्लोज हुआ है, सिंपल। सो पहला मैसेज, ये तो सेम स्ट्रक्चर मैसेज है, टेक्स्ट से जाता है, अपने आप जाता है। हाय खालिद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन पब्लिशिंग कंपनी, वी विल हैव अ कॉल, 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल है, उसके लिए आप ये एक मीटिंग बुक करो, यहाँ पे क्लिक करते, लेट मी शो यू दिस फर्स्ट। So when you click here, it opens my calendar. I'm going to set up all this calendar link for all of you too. I have यहाँ it. पे So you this have. is all यहाँ पे- automatic होता है and you are not into, आप नहीं कुछ कर No, रहे हो. I'm not. No, I'm Yeah, not. yeah. It is a free one. हाँ, so आप सब ऑटोमेटेड होता है, so उसने no haven't but few questions। फिर मैं चैटिंग करता हूँ, जब फ्री बैठा हूँ तो चैटिंग करता रहता हूँ। फिर मैंने कहा वापस से भैया एक आप काम करो, इधर लिंक तो बुक करो। फिर ये सेम क्वेश्चन, व्हाट इज अ बुक अबाउट, व्हाट्स माय इंस्पिरेशन, व्हाट इज द सेम क्वेश्चन। These are short messages, no? Already typed messages. शॉर्ट मैसेजेस। हाँ. देन फिर उसने मेरे को ना एक लेटर बना के भेज दिया सारे क्वेश्चन का, ये वो यूनिक गाय। फिर मैंने चैटिंग, जब उसने इतना लेटर Wow. भेज दिया वो समझ में आ गया कि इंटरेस्टेड है, फिर मैंने चैटिंग शुरू किया इसके साथ। Then I had a Zoom call, then have a meeting and just closed it. फिर यहाँ पैकेजेस भेज दिए मैंने। These are packages we are working on Dubai में। 15,000 dirham in Queen and 8,500 dirham in Prince. I'll tell you how to design that also. But India के rate we might come up with a different rate for Indians, but यहाँ पे दुबई में तो भी ये रेट करते हैं, which is around 3.5 lakh rupees for a book publishing। और 2 कॉल लगते हैं, 2 कॉल में क्लोज हो जाता है सीधा। फिर उसने अपना एड्रेस भेजा और उसके बाद में उससे मिल के आया। अभी देखो ये एक और है, बहरीन का केस है। इसमें क्या हुआ, इसने मेरे को भेजा, आई एम जस्ट सेइंग प्रोसेस इज एवरीवेयर सेम। हाय माय नेम इज हाला फ्रॉम कुवैत से है, कुवैत है, मैं नोवेल राइटर हूँ, ठीक है, आप राइटर लिखते हो। थोड़ा चैटिंग किया इसके बाद में, उसके बाद में इसको मैंने, फिर उसने अपना बुक भेजा, ओके ठीक है, तेरा आईएसबीएन नंबर है, इसको फिर हमने ये हमारे वो भेज दिए सारे, ये भी हमारा स्ट्रक्चर प्रोसेस है, हम टेस्टिमोनियल भेज देते हैं पहले से। एंड देन वी कीप चेकिंग कि व्हेन कैन वी हैव अ जूम कॉल, जो फ्री फन कंसल्टिंग कॉल है। तो प्रोसेस इज सेम। जैसे अपन खाना बनाते हैं, आप में से कितने खाना बनाते देखा है किसी ने किसी को, बनाया नहीं होगा तो भी, बिकॉज़ देयर आर मेल्स आई एम सेइंग। सो जब खाना बनाते हैं तो तवा गरम करके फिर रोटी डालते हैं। अगर हमने तवा गरम नहीं किया अच्छे से और रोटी डालोगे तो क्या होगा? हु कुक्स, टेल मी। यस नीरव। Good अनम्यूट example. करो ना। Take oops, I get it. But हाँ, yeah, I sorry. think क्या होगा? वो मतलब taste खराब हो जाएगा। पके कच्चा और बन कच्चा नहीं पाएगी अच्छे से, कच्चा 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 चटक हो जाए, जाएगा। चिपक जाएगी, टूट हौच जाएगी, पौच हौच पौच। पच हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। सेम क्लाइंट में होता है। तो जब तक तवा गरम नहीं होना तब तक आप अपना रोटी नहीं डालोगे, तो ध्यान रखना। तो ये जो लीड कॉल है, चैटिंग है, ये सब हम आई हैव रिटन अ बुक कॉल्ड डेट योर क्लाइंट। सो लेट्स से आई वांट टू पट ऑफ अ लड़की, ओके संचित, दिस इज फॉर यू। हम सब तो क्या है, इस जिंदगी से निकल गए हैं, Expiry. स्पेशली फॉर यू। तो समझो मुझे एक लड़की पटानी है, एग्जांपल। अभी मैंने देखा, अच्छी लगी, सो अभी somehow I need to get her contact. It's very simple now. Instagram ले लो, Instagram पे चैटिंग चालू होती है। That's how people these days, पहले हम नंबर लेते थे, आजकल से Instagram से शुरू होता है, DM करते हैं, Instagram पे चैटिंग होगी। अब before I propose her, मतलब propose a meeting for a coffee, ऐसा नहीं है ना, मैंने आज बोला हाय आई सॉ यू इन द फंक्शन एंड या मेरे से शादी में मिला सुनने किसी लड़की से, वही दूर दूर के, मतलब दूसरे शादी के लड़के मैं लड़की की तरफ से गया, लड़के वाले की तरफ से थी, और उसे DM लिया मैंने उसको बोला कि हाय आई सॉ यू। मैं उसको बोलूं पहले दिन ही, लेट्स कैच अप फॉर कॉफी टुमारो, वो क्या बोलेगी? करके बोलेगी नहीं, बोलेगी पता नहीं, बोले स्टॉकर है बोलेगी। तो Correct. थोड़ा थोड़ा शुरू करना पड़ता है कि ओके व्हाट सब्जेक्ट आर यू इन, व्हाट आर यू स्टडीइंग, ओके यू आर इन ह्यूमैनिटीज, व्हिच कॉलेज आर यू इन, अच्छा व्हाट्स योर प्लान आफ्टर ग्रेजुएशन। सो आप थोड़ा बिल्डअप करते हो डिस्कशन, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं उस डिस्कशन,
उसके पहले उसका लाइक करना, कमेंट करना, उसको थोड़ा खुशी बनाना। सेम टू सेम वी डू विद ऑथर्स। संचित तो मैंने कहा कैमरा ही बंद कर दिया संचित ने। नहीं नहीं, वो इशू आ रहा था क्या? नहीं नहीं, मेरे को लगा मैं ही इज ऑन द स्पॉटलाइट इसलिए। So basically what happens is then same we do with authors. So let's chat with them, talk to them, have a coffee. थोड़ा कुक करो उसको। इतना है ना, पहले तो बुक कोचेस और पब्लिशर दुनिया में है नहीं, उसमें से एक पब्लिशर उसको मिला है जो इतना पूछ रहा है, इतना बात कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है उसको, Overcooked. then he will be convinced and will convert. तो थोड़ा कुकिंग करना पड़ता है, ओके, नर्चरिंग करना पड़ता है। So that's what I also do and that's how in single call. So मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, लीड आती है, वी हैव लिटिल चैटिंग, करीबन 10-15 चैट होने चाहिए उनके साथ में। 15 चैट होने के बाद में टेस्टिमोनियल्स जाते हैं, कैलेंडली का मैसेज पुश होता है कि भैया अभी 1-to-1 कॉल बुक करो। अब मुझे पता है चैटिंग हो चुकी है, मेरे टेस्टिमोनियल दे चुका है और मोस्ट प्रोबब्ली उसने मुझे गूगल पे सर्च किया होगा, मैं अज्यूम करता हूँ। सो वी हैव मेड श्योर दैट गूगल टॉक्स गुड अबाउट मी, वो हमने हैंडल किया है पूरा। एंड देन कैलाश पिंजानी गूगल पे डालो तो सब अच्छे से आता है। उसके बाद में नाउ ही गेट्स इनटू कॉल्स, ऑलरेडी हाफ कुक्ड। फिर मेरे ट्रस्ट कॉल के फिलोसफीज हैं, आई यूज दैट फिलोसफी इन द ट्रस्ट कॉल एंड आई टेल देम माय रेट्स एंड 10 out of 3 would ask me the bank details to transfer them. That's the ratio is happening and this is a very simple process. मतलब लीड आया है 6 या 7 दिन के अंदर 10 में से 3 लीड क्लोज होती है and that's keep working simple and that's the process you got to follow. ये प्रोसेस फॉलो करना है, ओके। सो as I said, it's very simple world, only आपने कभी किया नहीं है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो कितना सिंपल लग रहा है, ओके। समटाइम इट इज आल्सो शॉकिंग कि इट वर्क्स सो क्विकली एंड सो फास्ट दैट ये ऐसा लगता है कि अच्छा इतना जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है काम, व्हाई पीपल आर कन्वर्टिंग सो फास्ट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड बिहेवियर फिलोसॉफी, उसको फॉलो कर रहे हैं कि हाउ पीपल ट्रस्ट एंड वी आर गुड पीपल। फॉर्चुनेटली मैं आपको सेलेक्ट कर रहा था, मैं देख रहा था अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि ये वो सुपर पावर सिखा रहा हूँ मैं आपको जिससे आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। I'm trying to tell you how brain works, how do you create trust and how can you make people do what you want. But what you should be wanting is their happiness. वो चेक कर रहा था मैं आप सब, वो सब है आप में, तो अभी मुझे आपको सिखाने में दिक्कत। अभी now anyone who will be working with you, their life will get uplifted. Yes, Supriya. जैसे लीड जनरेशन का आपने बताया है, इट कम्स, तो अगर अभी हमारे ड्यूरिंग आवर कोचिंग में अगर कोई क्लाइंट हमें आते हैं तो क्या वी विल स्टार्ट डूइंग इट, पिचिंग देम? एक हफ्ता रुको, आई एम जस्ट गेट यू, विल स्टार्ट द प्रोसेस इमीडिएटली। ओके, तो मैं आपको ना डायरेक्टली प्रोसेस पे लेके जा रहा हूँ। जैसे हमने लीड वीडियो बनाया, मैं अभी 10-12 दिन के अंदर सबके लीड वीडियो बनवा दूंगा। क्लाइंट को सबसे पहले आपका लीड वीडियो जाएगा, ट्रस्ट कॉल के मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर ट्रस्ट कॉल आप लोगे उनके साथ, रादर मैं मेरे ट्रस्ट कॉल के वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा एंड आई विल गिव यू दोस वीडियोस टू वॉच, हाउ डू आई टॉक इन माय ट्रस्ट कॉल्स, यू गो एंड वॉच दोस वीडियोस एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर ट्रस्ट कॉल्स। ट्रस्ट कॉल के बाद वो पे करेगा, पे करने के बाद इमीडिएटली इट स्टार्ट्स द सेशन। नाउ ट्रस्ट कॉल के बाद जो फर्स्ट सेशन है वो आज हमने कवर कर लिया। तो Okay, सर जो trust call- लीड जनरेशन है वो हमको खुद ही जैसे हम फेसबुक वो में भी मैं लगाना है। सिखाऊंगा आपको कैसे करना। अच्छा, लीड जनरेशन कैसे होगी वो बताऊंगा। ओके, दैट आल्सो विल वर्क ऑर्गेनिकली फर्स्ट। ऑर्गेनिकली Okay. करने से कैसे स्लो आती है लीड्स, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक करोगे तो बहुत फास्ट आती है लीड्स, Okay. बिकॉज ये दिस प्रोसेस वर्क्स आल्सो विद स्ट्रेंजर्स। तो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन करोगे तो थोड़ा पैसा डालना पड़ता है, बट अगर ऑर्गेनिक करोगे तो भी रिजल्ट आता है। थोड़ा सा स्लो आता है ऑर्गेनिक में बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम योर स्मॉल नेटवर्क, But they लाइक stay. हाँ They stay. Organic leads stay. जैसे हम लोग Facebook leads से है ना, तो it's all how much ever you do, little of crap comes and then they don't stay. Yeah, they don't stay. But organic is better, convert jaldi hota hai, lekin and it also depends on how much work you've been doing. Like I know for Shivani, for Sagar, for Simran, for all of you, I think Prakash और सुप्रिया को छोड़ के आप सबके लिए आसान है, क्योंकि आप बहुत सालों से काम कर रहे हो. So you have certain network of your own who follow you for certain things. Rather for Supriya also, for Batch Flower, you have certain network. So there are people who follow you for any one thing. Like for Sagar को लोग वीडियो के लिए जानते थे, and suddenly he started proposing book.
So people know you for one thing and you start proposing book, people start converting automatically. जिसने बिल्कुल काम नहीं किया है, उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगा to create first level of circle. दिक्कत मतलब it will take more time, that's all. And someone who have at least, I'll say even 200-300 people who follow you genuinely, तो भी आपके initial 5-6 lead फटाक से generate होंगे उसी में से, for whatever you do. Okay. Now your past hard work from last 3 years, 5 years, 6 years, whatever you done, would materialize immediately in this book writing process. तो जो जितने पहले से कर रहा है उसको जितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत भी पुराना कर रहा है, उसने ऑलरेडी अपनी हल्का फुल्का कम्युनिटी फेस वर्क फेस वैल्यू बना के रखा हुआ है. सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू मटेरियलाइज, बट इट इज गोइंग टू वर्क फॉर ऑल ऑफ यू फॉर श्योर. काम सबके लिए करेगा, बिकॉज दिस इज वेरी नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. बिकॉज आज किसी को रॉकेट साइंस पे बुक लिखवाना है ना, तो भी हम लिखवा सकते हैं, बिकॉज बुक तो उसको लिखना है, हमको तो केवल गाइड करना है उसको. अभी आज ये एक्सरसाइज आती, कोई साइंटिस्ट के साथ बैठा होता, बोलता आई वांट टू राइट ऑन रॉकेट साइंस, ऐसे वंडरफुल, बिकॉज ऑलवेज बिलीव ऑडियंस इज मोर इंटेलिजेंट देन यू. तो रॉकेट साइंस कौन लिखना है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है. रॉकेट साइंस मैं क्या बताऊंगा, वैसे भी मुझे कुछ नहीं बताना है, करना तो सही है. आई हैव अ स्ट्रक्चर एंड अ फ्रेमवर्क व्हिच आई जस्ट टेल हिम. अच्छा, रॉकेट साइंस पे 10 चैप्टर क्या लिखोगे, टेल मी द 10 चैप्टर्स. ओके 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 ओके, व्हाट 10? अच्छा, नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज. मैं आपको करवाऊंगा ये बाद में. फर्स्ट चैप्टर में 10 क्वेश्चन क्या क्या होने चाहिए. ही लाइक द 10. ओके, स्टॉप, स्टार्ट राइट. So that will go next chapter. So but it's a simple process. Only framework होने के कारण आपको आसान बना रहा हूँ process में, और मैं आपको human psychology सिखा रहा हूँ. क्यों? Because the same psychology will go for anything you do. जैसे अगर शिवेनी want to launch her NLP programs or any other program too, or Simran want to launch happiness community or something, the process is same. You should have a lead video, you should have a trust call, you should have rather I'll tell you, trust call is a better method than Facebook. I'll teach you this also why. Let me quickly touch upon, though we are having just 10 more minutes, but let me touch upon, there are two methods of inorganic sales. One is Facebook lead cost, Facebook leads, and second is Facebook leads in a group webinar mode, and second is one-to-one mode. So let's say I do so there's a two methods. We'll talk both the methods later on. जैसे एक method is when मैं Facebook lead की, and I said that I'm doing one XYZ seminar. It's a free seminar or 99 rupees ka seminar. Why don't you come and join? Now people will come to the seminar, they join the seminar, and then I will upsell them to my next level program, which is 2,000 rupees. Then I upsell them to 25-30,000 rupees. Then I upsell them to 1.5 lakh program. This is one method. इसमें कैसा होता है, lot of strangers come in and the drop ratio is very high. So you lose lot of money on Facebook lead generation. So इसके लिए हम simple process हमने भी क्या किया हुआ है, we directly sell high level. Why do we sell low level? क्यों बेचना है मुझे 2,000 का प्रोडक्ट, क्यों बेचना है मुझे 25,000 का प्रोडक्ट, मैं डायरेक्टली हाई लेवल बेचूं. तो उसके लिए अभी हमने क्या शुरू किया है, we do a lead generation, we do a trust call, we cook nurture the lead, और उस कॉल में डायरेक्टली हाई लेवल अपसेल करते हैं उसको, directly high level. So instead of doing small ticket programs, why don't I directly do high level programs? और high level में समझो मेरा high level, even मेरा high level का cost 25,000 रुपए है, and I know out of 10 I'm able to close 3. It's very simple that I know that if I need to earn 3 lakh rupees and my high level program is 25,000, I need to sell it to 12 people, and I need to have 100 calls. That's all. Then slowly you improvise कि कैसे आप अपना रेट चेंज करो. 25,000 को 35 कैसे करोगे, 35 को 45 कैसे करोगे, 45 को 1 lakh कैसे करोगे. Because now when I charge 1 lakh rupees for my high level course and out of 10 3 closes, तो मुझे 3 लाख कमाने के लिए 3 ही क्लाइंट चाहिए. Okay, you increase the value to them in value product. So we're going to talk about all those things too. But one-to-one trust call is the very important change we brought in this year 2023. उसके पहले हम ज्यादातर ग्रुप कॉल्स ही करते थे, ग्रुप्स वेबिनार्स करते थे. अभी हमने बहुत कम कर दिए ग्रुप वेबिनार्स. मेजर इज वन टू वंस. आई डू 2 1-to-1s a day. मेरा फिक्स है, मैं 2 1-to-1 करता हूँ मैं. एंड दैट मींस इन अ मंथ आई विल बी डूइंग अराउंड 60 1-to-1s अप्रोक्सीमेटली. कभी-कभी 3-4 भी होते हैं, बट एवरेज 60 1-to-1s करता हूँ. एंड माय रेशियो इज लेट्स से आई क्लोज 3 to 4 out of 10, मतलब 60 में से अराउंड 15 odd will close, 12 to 15.
15 क्लोज होते हैं and I directly pitch high level, which is 4 lakh rupees का product है. It goes well every month. So I'll not be taking you to the slower journey to growth. So नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर से नीचे आएंगे. Okay. So I'll get you prepared for all those things. मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, it's a new philosophy. अभी तक मार्केट में लोग फॉलो नहीं करते. अभी तक मार्केट इज स्टिल फॉलोइंग. वेबिनार करो फ्री में, देन नेक्स्ट लेवल सेल करो, फिर नेक्स्ट लेवल सेल करो, फिर नेक्स्ट लेवल सेल करो. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टोल, लॉट ऑफ मनी. डिफिकल्ट. लेट्स गो इजी वे. ठीक है, थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी. Okay, so now let's quickly summarize what is the one most important learning for the day, and we close the meeting for today. Then we meet up tomorrow. Supriya, you first. अच्छा, एक और है, कल से जब हम आएंगे वापस कॉल में, फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ यू इज 30-day बुक राइटिंग फॉर्मूला. दैट वो तो आपको रट्टा है, होना चाहिए. सबसे पूछूंगा रोज, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ लीड्स टू अस. लीड वहीं से आने वाली. ये सुप्रिया, Okay. one most important thing you learned today. The most important thing, it is how to read the client's mind, and in a logical and emotional way. First, we need to explain what exactly you are going to have it, his or her frame, and then we will pitch into the emotional way. And this is the biggest learning for me. Wonderful. For my sales also, I can use this now. Wonderful. Simran? Yes, to enter the mind through the logic, and then like a pendulum shift to the emotion, and then logic and emotion, and then go with that video call. And then important learning was focus on how they can, like, help them to find the topic they are interested in writing. So that is the main thing we have to work on it. Okay, and then the target audience was very clear, very nicely it was explained. So that is important actually. Even when I attended your session, I was telling it is for everyone, but when you said, I got a joke. Okay, it should not be for everyone. So I remembered that. Yes, Very thank you. Prakash ji? Yeah, the balance of logic and emotions for me as well, but also the rule of the world, where the first most important thing is the money, followed by happiness, and third is adding value to people. Wonderful. So add value to yourself first before you add value to people's life. It Okay. works that way. Yes, Sanjay. So I learned that use logic to, get into their minds, so that they are like, to attract them, and then use emotion and use it like a pendulum to, at the end, because the emotion triggers them to buy, and intelligence helps us to get to the trigger, helps them get. And after that, I learned that I make them feel good about themselves in the trust call, and so that and give them clarity about what topic they want to write book on, so that it's not you telling them, but it's you just showing them the right path of where they are good at. And then other things like of sales, of objection handling, and how you can pitch them at the end. Wonderful. Monica, any share? Yeah, so today's call was basically understanding the buying behavior or the customer behavior psychology, how it works, and how we can use through a systematic process to get through to their mind and then to their hearts. And as a coach, it is very important that we should not tell them what they need to do, rather than get it out from them so that they take action, rather than we telling them, no, you have to do this. So that would be more appropriate if it comes from their heart, that this is what I should be working on, so that the process of completion of the project enhances. Yes, wonderful. Sagar? First of all, getting clarity about your client, like what is the situation in he is in right now, and what is his desire, like where he want to go, and then clarify that way to him with
only his thoughts कि कैसे जाओगे आप, right? Asking him more and more questions, so that questions will give him or her clarity about his desired goal, and then you can add some our expertise, like कहाँ पे help कर सकते हैं हम उसे. So and then pitching high ticket, simple. Neelam? Actually, today's takeaway means, first of all, in any case in front of us, how to give proper topic. Like, suppose when I have started my book, I am also in so many things, which thing I want to write. So first of all, we want to give proper idea and proper topic. Second thing, they want to मतलब उनका logic mind set clear करना है कि you want to write this topic in proper way. We have to guide with the connection, जैसे pendulum का आपने बताया वो इसे. And third thing, after why you want to write a book and what is the benefit of this writing, means you are not tell us right now benefit, but I feel from my side कि वो benefit भी है. That's it from my side. Yeah, Dr. Steven, you want to add one most important thing you learned? Today, sir. I really love the way you have taken the simplicity with which we can start with the logic and then give the emotional part, and it's a very healthy, holistic relationship building, trust building, which you mentioned, that the client actually starts to trust us, and then hamara aur ownership badhta hai. Our responsibility is there that they also win. It is a win-win situation. And designing the customer avatar, anyway, of course, I also have been doing earlier, but I got little more clarity on that. And the topic, how you arrive at the topic, is that systematic procedure aapne jo questions kiya hai na. So out of all those 9, the overlapping things come, and that is where they know that that is the topic. Bang on. We'll tell them. If supposing it's not functioning, then you already told that we have to go back and redesign that. So depending on the time we are investing for them, we can close that call for them. And that is all. It is a very simplified procedure. मुझे अच्छा लगा है, sir. So, but I'll just finish this with when you read Bhagavad Gita again now. So you see, no, Krishna asks first chapter में कि जो मेरे सामने खड़े हैं मेरे भाई हैं मेरे चाचा हैं, how can I kill them? So Krishna doesn't say kill them. Krishna starts now karma yoga, dharma yoga, all the yogas. He says क्षत्रिय का धर्म ऐसा है, क्षत्रिय होता तो ऐसा करता, क्षत्रिय होता तो ऐसा करता. तू क्या है? तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो तू क्या करेगा? मैं यही करूँगा. He's a wonderful coach. Okay, so he never told him to fight. He just enlightened him and told him to decide what he should do. तो वही हमारा भी काम है, उनका दिमाग खोलना है, भैया तुम्हें ये करना है. Let them do. Okay, so wonderful session today, and Wow. we'll meet up tomorrow. Sure. Thank you so much. I get to see many avatars of yours, sir. Today is the Krishna avatar. Before that, Daddy avatar. Last. Lot more to come. Lot more to Lot come. more to come. to Yes. go. Yes, yes. Yes. I'm sure Prakash will design different. आज कृष्ण बनने वाले हैं. It was absolutely nice, Prakash. I wanted to share that. And ekdam, your handwriting, everything is so beautiful, very really creative. Nice. Thank you so much. Thank you. कल का We'll have a सेशन वो good, रिकॉर्ड हो गया. आज Exactly. का भी डाल दीजिए करके, प्रकाश जी. And Simran, मुझे संचित का नंबर देना, so we'll add him to the group. Okay, yes, I'll send it. Yes, sir. चलो, okay, bye bye. Okay, bye. Thank Good you. night. Bye-bye. Bye. Thank you. Good night. Thank you so much. Bye. Bye. Good night. Bye bye.